multifaceted university. In fact, the word entrepreneurship, if we see, it has two P's. And the first P of entrepreneurship is at sixth place. Up till sixth place, you have to have a lot of patience. You have to make a lot of preparations, and you have to do a lot of practices, healthy practices, to in fact begin any entrepreneurship journey. And you have at 16th number, at last again another P, which really gives you, I would say, a final purpose, a profit, if some, that is also very great motive. So I would say entrepreneurship is a big journey. Then you make your presence felt also. So for all these purposes, what we need teachers, gurus, and I think we have a lot of gurus in our institutions also for all students. So they are also, we have ample number of advisors also. Number of advisors are there who keep on giving us a lot of advices. But finally, we have to find out one mentor also. A mentor who really help us and take you where you really want. So today we have our mentors with us. So thank you so much, sir, for that. Now, before we proceed further, I would request Shetty sir to present citation to Dr. Pooja Sharma. We are introduced by G20. आजकल बड़ी चर्चा चल रही है G20 की, उसमें वुमेन 20 को भी उन्होंने इंक्लूड किया है। G20 को मैं पूरा इवेंट अभी जो चलेगा, इसको मैं ब्रॉडली दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा। वन इज, इनसे मैं इंट्रोडक्शन लूँगा, इनके पैशन को इन्होंने अपने कन्वर्ट कैसे किया अपने सोसाइटी में एक्ट करने के लिए, सोसाइटी को इफेक्ट करने के लिए, और कैसे इनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं और एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट होता जा रहा है। एंड हाउ दे फेस समटाइम्स इन देयर दिस जर्नी लॉट मैनी चैलेंजेस, वो तकलीफ़ें जो इनको आई, जो एज ए वुमेन एंटरप्रेन्योर के जो हम सोचते हैं आती हैं, उनको इन्होंने कैसे हल किया। पर इस सारी जर्नी को लेने से पहले मैं आपके साथ एक छोटा सा एक एपिसोड आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो परसों ऑलमोस्ट अबाउट 70 आवर पहले हुआ है। हमारे हिंदुस्तान की टीम देवोस में G20 में, आपने इन्वेस्ट इंडिया का नाम सुना होगा, आपने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सुना होगा, वो वहाँ प्रेजेंट कर रहे थे। उनकी डिस्कशन का जब स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, तो उसमें जब 2016 में स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था, 16 जनवरी को स्टार्टअप को, तो उन लोगों ने, किसी ने ऑडियंस में उस टाइम में ये पूछा इन्वेस्ट इंडिया के एमडी से, कि उसी के, अगर आप वीडियो देखोगे अवेलेबल है, उसने कहा, कहते सर आज आप इसके बारे सोच रहे हो, लेकिन आप इसकी स्टार्टअप इंडिया की या एंटरप्रेन्योरशिप की सक्सेस को कैसे डिफाइन करोगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो उस एमडी ने बोला, कहते हैं मैं उस दिन इसको सक्सेस मानूंगा जिस दिन हिंदुस्तान की जो मदर्स हैं वो अपने बेटियों के लिए एंटरप्रेन्योर के वर्क चूज़ करना शुरू करेंगी। साथ में सेक्रेटरी बैठे थे, उन्होंने उनको इमीडिएटली वो बोला, कहते आप बड़ा अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन आज के स्टैटिस्टिक्स को एक चीज़ देखिए, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स कहता है, हिंदुस्तान के 50% ऑफ द एंटरप्रेन्योर जो रजिस्टर्ड हैं, उनके फाउंडर वुमन हैं। नाउ लुक इनटू इस पूरी स्टेटमेंट को हम कैसे देखते हैं। सो द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस हैज ऑलरेडी बिल्ट इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, विद द हेल्प ऑफ दोज वुमेन हु मेड इट टू हैपन एंड टू शो टू द वर्ल्ड क्या हम क्या करने जा रहे हैं। तो उसको एक मद्देनज़र रखते हुए आज हमने ये प्रोग्राम उसी अंदाज के अंदर, उस अम्ब्रेला के अंदर हमने ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई वी फैसिलिटेटेड एंड ब्रॉट। अगर आप देखोगे, इसमें जब हेल्थ केयर की बात हो रही है, पूरी दुनिया हेल्थ केयर ऊपर जा रही है, मैं जब वहाँ बैठे एनालाइज कर रहा था, ये सारे लोग हेल्थ को डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं और उस प्रॉब्लम को डिफरेंट एंगल से सॉल्व कर रहे हैं। और आप लोगों को भी, जो सेकंड मेरा स्टेज होगा, जब इनकी इंट्रोडक्शन होगी, मैं चाहूँगा आप लोग इनसे खुल के इंटरेक्ट करें। आपके दिमाग में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ब्रिंग बिफोर अस, वी विल डेफिनेटली लव टू इंटरेक्ट एंड आंसर दोज क्वेश्चंस। तो अगर मैं शुरू करूँ, मैडम, मैं आपसे, मेरे लिए एक आज डिफ़िकल्टी होगी, डॉक्टर पूजा, मिसेस पूजा, कैसे पूजा 1, पूजा 2 को कैसे करूं, बट बिकॉज दे आर सिटिंग क्लोजर टू ईच फॉर, मेरे लिए बहुत इजी होगा। मैडम, मैं पूजा को कहूँगा, आप अपने जो जर्नी है आपकी, आई नो यू आर फ्रॉम ए बहुत सिंपल फैमिली से आप आए हैं,
और उस फैमिली से निकल के एक ऐसा यूनिट, एक ऐसी इकोसिस्टम क्रिएट करना जहां प्रेसिडेंट साहब ने आपको अवार्ड दी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको ऑनर किया है, स्टेट में आप बैठे हैं और हमारे नेक्स्ट डोर बैठे हैं। आप अपनी जर्नी हमारे से एक बार शेयर करें और इन लोगों को आगे कैसे हम लेके जाएं स्टूडेंट्स को अपने साथ, प्लीज़ आई विल लव टू हैव दैट। मेरा नाम पूजा है, मैं गांव चंदू से ही हूँ, आपके बिल्कुल नज़दीक ही। मैंने 2013 में अपना सिटीज नाम से स्वयं सहायता समूह बनाया था और इसमें मैंने गांव की 10 महिलाओं को अपने साथ में जोड़ा, क्योंकि मेरे पास भी आमदनी का कोई साधन नहीं था, 3 बच्चे थे, तो सोचा कि क्यों ना मैं अपने पति की हेल्प करूं। मेरे जो हस्बैंड हैं वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी में है, लेकिन जो परमानेंट न होने के कारण सैलरी कम थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनकी किस माध्यम से हेल्प करूं। तो मैंने 2013 में कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़कर एक एसएचजी बनाया और रोस्टेड सोया नट्स की हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जैसे हमने काम शुरू किया, एक तो महिलाओं को मतलब घर से बाहर निकालना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि गांव की महिलाएं हैं, घूंघट पर्दे में रहती हैं, वो निकलना भी नहीं चाहती और उनको कोई निकलने भी नहीं देता। लेकिन धीरे धीरे मैंने उनको समझाया कि हम कुछ काम करेंगे तो आमदनी होगी, जिससे हम अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बनाएंगे और खुद भी सशक्त बनेंगे। तो ये बात महिलाओं के समझ में आई और 10 महिलाओं ने मेरा उस टाइम पे साथ दिया। और जैसे ही हमने रोस्टेड सोया नट्स की ट्रेनिंग लेके काम शुरू किया, तो समस्या सबसे बड़ी होती है मार्केटिंग की, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन मार्केट कहाँ करें, उनको बेचें कहाँ पे, सबसे बड़ी समस्या ये होती है। उसके लिए हमें बाहर निकलना होगा। तो कोई भी मतलब जो पुरुष थे कि हमारी महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी, मैंने इसका भी जिम्मा खुद ही उठाया और मैं घर से बाहर जैसे एग्जीबिशन में जाने लगी। इसके साथ मैंने अपने समूह को हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जोड़ा। जब मैं एग्जीबिशन में जाती तो एक प्रोडक्ट को लेके मैं खड़ी होती थी, जैसे सोया नट्स। इसके साथ मैंने सोचा कि एक प्रोडक्ट किसी को पसंद आए ना आए, तो क्यों ना हम और भी चीज़ों को ऐड करें। तो बचपन से मैंने खेतीबाड़ी और पशुपालन किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारी जो दादी नानी से हम सीखते आ रहे थे, हमने गेहूं से दलिया बनाया, बाजरे से लड्डू बनाए और इसके साथ में हमने काफ़ी तरह की मठियाँ बनाई। तो उन सब चीज़ों को लेके हम एग्जीबिशन में जाते तो लोगों को ये चीज़ें बड़ी पसंद आती, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और गांव से सीधा जब इंसान वहाँ पे ये प्रोडक्ट लेके जाता है तो इनकी काफ़ी डिमांड भी होती है और लोग पसंद भी करते हैं। तो ऐसे ही हौसला भी बढ़ने लगा और महिलाएं भी काफ़ी जुड़ने लगी। आज मेरे 12 एसएचजी हैं और गांव की 200 के करीब महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़े, आमदनी होने लगी तो महिलाएं जुड़ने लगी, उनका हौसला बढ़ने लगा। फिर 2017 में हमारे साथ एक एनजीओ आया, जिसकी हेल्प से हमारे यहाँ बेकरी ओवन लगा। बेकरी ओवन लगने के बाद हमने मतलब उन्होंने बिस्किट जो कुकीज़ होती हैं वो बनाने की ट्रेनिंग मुंबई से शेफ बुला के दी। ट्रेनिंग लेने के साथ ही हमने सोचा कि कुकीज़ तो हम बनाएंगे ही, साथ में क्यों ना हम अपने किसान भाइयों का भी फ़ायदा करें। तो हमने ज्वार, बाजरा, रागी, चना, जितने भी मोटे अनाज होते हैं हमारे किसान भाई जो भी उगाते हैं, उन्हीं चीज़ों को हम डायरेक्ट किसान भाइयों से ख़रीदने लगे और उनके प्रोडक्ट बना के हम मार्केट में देने लगे। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज 70 से 80 प्रोडक्ट हमारे हैं, इसमें मठियाँ हैं, नमकीनें हैं, लड्डू हैं काफ़ी तरह के, और हम लोगों की डिमांड के अनुसार भी हम प्रोडक्ट बना के देते हैं। आज सरकार की कुछ संस्थाएँ हैं, जैसे हैफेड में हमारा MOU है, ब्लिस बॉक्स के नाम से हमारा जाता है, और जो कुकीज़ हैं हमारी 5 स्टार होटल, मुंबई हयात तक, गृह मंत्रालय तक आज हमारा ऑर्डर जाता है। मतलब आप खाओगे तो ये बोलोगे कि हाँ, मतलब बिस्किट और कुकीज़ में दम है। तो इसीलिए डिमांड है, क्योंकि हम लोगों को बिल्कुल ओरिजिनल प्रोडक्ट बना के देते हैं और साथ में महिलाओं का भाव सबसे बड़ा होता है। कहते हैं हमारे हरियाणा में जैसा खाया अन्न वैसा हो जा मन, तो उनके भाव भी मतलब अलग होते हैं। बनाते वक्त हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं ताकि खाने वाले का भी भाव अच्छा रहे। और आज वो महिलाएं जिनके पास कोई भी साधन नहीं था कमाई का, 7 से 8 हज़ार रुपये महीना कमाती हैं। और गांव की काफ़ी सारी महिलाएं आज काम में जुड़ी हैं और एसएचजी में भी जुड़ी हुई हैं। इसके साथ में ही देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाओं के फ़ोन आते हैं मेरे पास,
और वो हमसे सलाह लेती हैं कि आपने जैसे शुरुआत की, हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो महिलाएं भी सब छोटे से शुरुआत करके एक बड़ा बिजनेस स्थापित करें, क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो हैं, चैनलों, अलग अलग चैनलों के माध्यम से गई हैं, जिससे महिलाएं मेरे से जुड़ी हुई हैं। इसके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने काफ़ी सारे अवार्डों से मुझे सम्मानित किया है। आज मैं वक्ता के रूप में दूसरे राज्य में जाती हूँ कि हम महिला सशक्तिकरण के साथ साथ किसानों की आय डबल कैसे कर सकते हैं। SGT यूनिवर्सिटी जो है बिल्कुल पास में है और बहुत अच्छे डॉक्टर इन्होंने दिए हैं हमें। मैं चाहती हूँ कि फूड में भी बच्चे आएँ, और मेरा मानना है जब से मैं ये काम करती हूँ और अच्छा सा चल गया जब ये काम, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे नौकरी करें ही ना, वो बिजनेस करें, क्योंकि नौकरी में हम सिर्फ सैलरी प्राप्त करेंगे, लेकिन बिजनेस में हम मनचाहा कमा सकते हैं। हम लोगों की डिमांड के अनुसार प्रोडक्ट बना के उनको देंगे तो हम मतलब जितना मर्जी कमा सकते हैं। दिक्कत आती है तो सिर्फ मार्केट की, लेकिन आपके प्रोडक्ट अच्छे हैं तो मार्केट की दिक्कत भी ख़त्म हो जाती है। तो SGT यूनिवर्सिटी में चाहती हूँ हमारे साथ आए और ऑनलाइन मार्केट में हमारी हेल्प करें, और बच्चे आने वाले टाइम में रोज़गार देने वाले बने, ना कि लेने वाले, और महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी होकर सशक्त हों। क्यों महिलाओं के हाथ हमेशा ऐसे लेने वाले रहें, क्यों ना उनके हाथ देने वाले हों। हम जब इस तरह की स्टोरी सुनते हैं, मुझे याद है जब हम छोटे थे, आप भी जब छोटे होते हो गए किसी ज़माने में, आपके दादा के गोद में, नानी की गोद में, दादी की गोद में आपको स्टोरियाँ सुनाई जाती थी। वो स्टोरी आज तक हमें याद है। हम और कोई चीज़ भूल जाएं, आज भी अगर हमारा नाना या दादा या दादी आपने ऊपर ग्रैंडफादर्स हाथ रखते हैं, तो आज की जो स्टोरीज़ हैं वो आज की उम्र के लिए हमें एक डिफरेंट टाइप की इंस्पिरेशन देती हैं, जिसके साथ मुझे आई एम श्योर अबाउट दिस, ये हमारे साथ रहेंगी। और जैसे इन्होंने बोला भी हम क्यों नहीं इनके पार्टिसिपेट करके इनके साथ आगे बढ़ सकते हैं, तो हमें एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर सोच करने के लिए उसको मजबूर कर रही हैं। जब मैं मैडम की स्टोरी सुन रहा था, आपने सारों ने एरोप्लेन की स्टोरी सुनी होगी। एरोप्लेन ने बनाया किसने था? राइट ब्रदर्स ने, एम आई राइट? ठीक है। वो बना कैसे, क्यों बना? सन 1900 की बात है। मैं मैडम आपके साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ, सुनते सुनते मेरे दिमाग में वो स्टोरी ख्याल में क्यों आई। जब गवर्नमेंट ने 1900 में ये तय किया भी हमने कोई ऐसी चीज़ बनानी है, उन्होंने एक सबसे लर्नड आदमी, सबसे पढ़ा लिखा आदमी जो स्टैनफोर्ड का पढ़ा हुआ था, उसको 1900 के उसमें ईयर में $50,000 दिए गए उसको, और उसको सारा जो उसका गवर्नमेंट का लिंक था और ये सारा कुछ उसको पकड़ाया गया, तू ये कर। उसने अपना काम शुरू कर दिया, जो भी करना था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन हिज हैंड। साथ में एक ग्रुप था जिसको हम राइट ब्रदर्स बोलते हैं। वो अपने गांव में काम कर, किसी को कुछ नहीं पता था, उन्होंने अपने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उनका एक मिशन था, उनका एक थॉट था, हम एरोप्लेन बनाएं और उसको उड़ाएं विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी गवर्नमेंट सपोर्ट। उन्होंने अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चला और उन्होंने, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 1903 में पहला प्लेन उड़ा के लोगों को दिखा दिया, जबकि जिसके पास सारी फैसिलिटी थी, उसका नाम अगर मैं रिकलेक्ट करूं, ही वाज सैमुअल लेंगले करके था बंदा। He couldn't make it, but that fellow who has got a passion, who has got something in mind to do something, he created, और आज की डेट में हम उनको याद करते हैं। तो मैडम आपकी स्टोरी सुन के, without any support but keeping in a passion that woman can do it, you are doing it and you did it, and you have motivated couple of people from here जो आपके साथ जुड़ने की तमन्ना रखेंगे मेरे हिसाब से। तो इस जर्नी को और हम आगे ले जाते हुए हम ये कहते हैं, मैडम अपराजिता जी जो हमारे साथ अभी अभी जुड़ी है, मैं इनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, ये अपनी स्टोरी की तरफ से एक कॉर्नर चूज किया जहां पे हेल्दी फूड, जहां हम मिलेट्स को प्रमोट करने जा रहे हैं 2023 में, ईयर ऑफ मिलेट कह रहे हैं, और मैडम ने मिलेट्स को ऑलरेडी अपने हाथ में पकड़ लिया है, जिसको हम मोटा अनाज बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। साथ में ऑन दी हेल्थ साइड, मैडम प्लीज शेयर योर स्टोरी विद अस एंड वी विल ट्राई टू लिसन टू दैट। कैसे कैसे आपने ये जर्नी तय की और कैसे ये सोसाइटी में इम्पैक्ट खड़ा कर दिया। थैंक यू। So my journey
started just like you sitting here. I can almost look back and see myself sitting in any of the forums like this. So I was a normal pharmacy student, and I'm doctor by the profession of pharmacy only. And I had an infrastructure that was created by my father, but it's a partnership firm. So I used to work there after finishing my B.Pharm. I started immediately working, had some experience in hospitals, and then I started working in my organization. I worked in 1 or 2 organizations before also. And then the life was very nice. I was a R&D person. So I remember the first product that I made was pentoxifyl in SR tablet. So world was one this thing, and there were challenges because I was a woman, I was married, I was having children also. The family was going along, and it was difficult. So honestly, I'll be very honest with you. If I give credit of my success to anyone, that's my father, because he always used to say, वो उनको जब डांटना होता था तो इसी तरह से डांटते थे कि ये लड़कियों को पढ़ाना बेकार है, गवर्नमेंट के पैसे वेस्ट करती हैं. Because he felt very bad that after getting educated and enjoying the same facilities as men, you girls just want to sit at home and run your families and everything, because it's always enough. Money is never enough, and it's always enough. So it's not about money. So that's how उनके डर से I used to come, trust me. Because छुट्टी का मतलब ही नहीं होता था. I remember I had my first baby, and 14th day I was in the company because he didn't believe in all these things. So he was a disciplinarian. And then shock happened. 2002, he just died, just like that. And we didn't know it was one man's army. So we really didn't know what to do, and we had bought a huge, the company was in Okhla, there was this huge land in Bhiwadi, a mega project coming up in crores. We just didn't know. There was such a huge bank loan. I really didn't know. So everybody was saying that I think we should sell it and this. So I just saw my mother. She was 50, only 54 at that time. And I had younger sister also. So I thought, bikegi nahi. I told my mother, bikegi nahi. That's the only thing I knew. मुझे कुछ नहीं आता था. It was like I tell you, it's the passion and determination only. And there are I can literally write a book on the issues that I've faced. For example, one I'll share. I was not an engineering person, I was a pharmacist. The first batch I took all the workers from Delhi, and there was this achanak 50 kg ke mixer se 250 kilo ka mixer hai. And I had to collect everything, put first batch, even how to make starch paste maker nahi tha. So there was nth number of issues. The whole company was running on genset. I just asked, ये generator पे क्यों चला रहे हो भाई? 750 kVA का generator, इतना diesel लगता है. So my father was also getting angry at that point when all of a sudden we lost him. They said earth नहीं हुआ हुआ. So that was my first engineering project. कि earth कराना पड़ा. What I'm trying to tell you, it is a very big field. You can't even imagine the options that you have if you have patience and you have the capacity to know what all dimensions it is a dimensionless field, is my experience of last 25 28 years. It is a dimensionless field. Whether it's food, you can link with it. Whether it is IT, you can link with it. Whether you are an administrator, you can link with it. If you are good in documentation, you are a regulatory person, the world, sky is not the limit for you. So as far as, and then there are multi-dimensional roles. Whether you want to go in cosmetics, making, अरे भाई, name anything जिसमें production की pharmacy related ज़रूरत नहीं है. एक चीज़ बता दीजिए, even a chair that is being put here, not even single thing. Even wood needs chemist, even everything. You just run your eye around, एक भी चीज़ ऐसी नहीं मिलेगी. So it is an integrated field. The only concept is that when we are studying, we are very oblivious to the fact कि हमें क्या करना है, हम मतलब मस्ती में होते हैं. You have to enjoy life. But if I look back, I would have gained more if I was more aware in my that pharmacy or young years that I had the same goal or passion at that time. But it's not possible, and it's not expected also कि वो vision हो, but at least keep some vision. It will keep on growing because it's a ever growing field. The visions will keep on growing, and I would not like to take too much time, but trust me when I tell you,
I can't even list down the number of fields that are right now available if you are a pharmacy, if you have a pharmacy background. So sky is not the limit, and I'm wishing everybody to exploit your inner potential and take up the challenge of being a woman. Yes, there is a challenge. I will not say life has been bed of roses. Yes, you have to get up at 6, you have to tend your children, take the उस ज़माने में वो चलती थी buses जो ड्रॉप करती थी, नॉट द नॉर्मल बसेस, ये वाली वो क्या बोलते थे उनको, एक ऑफिस जो आई फॉरगॉट द नेम, एक यू स्पेशल तो कॉलेज के लिए थे. सो वी आई यूज्ड टू टेक दैट 7:30 बस, रीच 9:30 ओखला, लीव माय ऑफिस एट 6, गो बैक होम, रीच बाय 7:30, 10 चिल्ड्रन, and then that it was a difficult journey. I'm not saying it was a joke. Then cars came, then you had your own car, पर उससे पहले वो समय भी था जब सब कुछ वैसा भी किया. So it has been a struggle. I've enjoyed it. No regrets. I would like to live the same life again. Thank you very much. स्किल्स को देख के चलना होता है. फर्स्ट टाइम अर्थ का जनसेट चल रहा है, अर्थ लगी नहीं हुई, तो इसलिए हम 750 kVA की पावर नहीं ले सकते. इंटरेस्टिंग. जब मैं सुन रहा था, आप लोगों के मन में ज़रूर आ रहा होगा, मैडम इतनी डिफ़िकल्ट जर्नी से कैसे निकल रही है और क्यों हो रहा है. मैं एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ आपको, इसको एक्सपेरिमेंट करके देखना. हम जनरली कहते हैं एज अ स्टूडेंट, जो मैं जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ, सर ये कर सकता हूँ बट मेरे पास टाइम नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये करना चाहता हूँ मेरे पास, बट मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ बट नाउ इट इज़ रेनिंग आउटसाइड. आप इस बट को एंड में चेंज करके देखिए. छोटी सी चीज़ है. इट इज़ रेनिंग आउटसाइड and I want to go to office, I want to go to university. When you put the and into it, you will find the alternatives. मुझे कैब भी मिल सकती है, मेरे पास छाता हो सकता है, मेरे पास I can have my raincoat, and you will achieve that if you will put a simple from but to and. And my thought is that's what I was when hearing from Daksha, that definitely at different levels, when her father died, when she has to face so many, at every but stage she must have kept the and, which kept this journey going on. So there's something which a thought came and shared with. Now I request Dr. Pooja ji. Yeah, please. I just want to mention that we are a family of 650 people now in Lars. Kya baat. That's the impact they are creating, not just looking for the jobs. They created the jobs, and people are now starting working into them. Congrats. Yeah, Dr. Pooja, in the morning when we are interacting, I was hearing a couple of very interesting stories. I mean, the couple of her career, that इन्होंने कैसे कैसे अलग-अलग जगह पे, and the introduction you must have heard, इनको किस different areas में she is creating an impact. I would love to have, and the people would love to have your story. I am a gynecologist by training. So in medicine, when you see that there is a line on the monitor which goes like this, means you're alive. If the line goes like this, you're dead. So life needs to go like this. If life is going like this, it's not fun, it's not there, it's not life. So please remember that. So I have not had such an exciting journey. I'm a gynecologist by training. I did a very traditional learning. I was a Fauji child. I was a good student. So natural progression was कि डॉक्टर बनेगी. मेरे नाना जी ने कहा लड़की डॉक्टर बनेगी, तो हम डॉक्टर बन गए. लोगों ने कहा लड़की है गायनेकोलॉजिस्ट बनेगी, तो गायनेकोलॉजिस्ट बन गए. राइट, गायनेकोलॉजिस्ट बन के हुई शादी, तो शादी कर ली. शादी करके हुए बच्चे, तो बच्चे भी हो गए. अब घर कैसे संभालें? हस्बैंड भी सर्जन, मैं भी सर्जन, दोनों सर्जन काम कैसे करेंगे एक साथ? बच्चों को कौन पालेगा? सो इट्स अ वेरी सिंपल चैलेंजेस, द डेली चैलेंजेस ऑफ ऑल ऑफ अस वुमेन. देयर वाज अ सिंपल अपॉर्चुनिटी एट एम्स ऑफ रिसर्च. तो मैंने कहा चलो रिसर्च करके देखते, थोड़ा सा टाइम मिलेगा, इट विल बी अ बैलेंस्ड लाइफ. लिटिल डिड आई नो. So I had the opportunity and I met a wonderful mentor. मेरे को तो लगता है my life changed with mentors. जो स्टार्टिंग में आपने बोला, I met डॉक्टर भान. डॉक्टर भान से मेरी बात हुई. उन्होंने कहा पूजा तुम गायनेकोलॉजिस्ट हो, ज़िंदगी में पैसे खूब कमा सकती हो, कितने सर्जरी करोगी, कितने बच्चे पैदा कर लोगी? 10,000, 20,000. बहुत मेहनत करोगी तो कितने लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करोगी?
तुम पब्लिक हेल्थ में जाओ, पब्लिक हेल्थ में बहुत अपॉर्चुनिटी है. So at that time there was a breastfeeding promotion program and there was something to develop a road to health. I don't know आप लोग में से कितने pediatric जो चार्ट देखते हैं हम लोग, ग्रोथ वाला चार्ट्स होते हैं कि बच्चों की ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मैपिंग चार्ट्स. तो इंडिया का ग्रोथ मैपिंग चार्ट ही नहीं था. वो हम अमेरिकन चार्ट पे अपने बच्चों को मेल नरिश्ड मार्क करते रहते थे. सो दैट टाइम एम्स में ये डेवलप हो रहा था. आई पार्टिसिपेटेड इन दैट. इट्स कॉल्ड द मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी. एंड आई मस्ट से टुडे इन एवरी सेंटर द रोड टू हेल्थ चार्ट इज द चार्ट दैट आई वर्कड. From there, I went to development of vaccines. The first indigenous vaccine developed by such a big country, we did not have the vaccine development of our own. This was developed, the rotavirus vaccine from Bharat Biotech, that was called Rotavac. That Rotavac ka first trial ka first dose was given by me. I felt the pride of actually bringing that vaccine. Today, so many children are saved, those lives are saved because of that vaccine. From there, it was a good course. I was doing some good work. I was working with an NGO. I was working with the government. I was working. It was an employment, right? I was an employee. And this was good work. And then I came to Medanta, where I became what's called an intrapreneur. An intrapreneur is something which is a little different from an entrepreneur. An entrepreneur is जो अपने लिए काम करता है, right? इंट्राप्रेन्योर होता है जो इंस्टीट्यूशन में रह के एंटरप्रेन्योर जैसे काम करता है, जो नई चीज़ें इंस्टीट्यूशन के लिए करता है. So an entrepreneur is what I became. Intrapreneur is what I became at Medanta. I led their research team for 12 years. We did some really good work. We did phase 1 trials, new drug development, new vaccines. During COVID, a lot of things. I had a lot of exposures. One exposure that caused me to think immensely was when the government of India sent me to Israel. Now, Israel is the hub of innovation. वहाँ पे मैं आपके जैसे बच्चे हैं ना, वहाँ पे मैं उस तरफ बैठी थी, बच्चे इधर बोल रहे थे, हम सुन रहे थे. हम बाहर की कंट्री से आए थे, हम एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में छोटे बच्चों से सुन रहे थे. सो देयर वाज दिस यंग गर्ल हु केम फ्रॉम अ कॉलेज. ठीक है, स्टूडेंट थी वो आपके जैसी, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट. वो आके बोली कि अपने इंट्रोडक्शन में कि मेरे 4 स्टार्टअप्स हैं, उसमें से 3 स्टार्टअप्स फेल हो चुके हैं, एक स्टार्टअप मैं अभी कर रही हूँ, एक स्टार्टअप मेरा पाइपलाइन में है. मैंने कहा यार ये बड़ी इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग है. वो अपने फेलियर से अपने को इंट्रोड्यूस कर रही थी. एंड दैट कॉज्ड मी टू थिंक, हम कैसे अपने बच्चों को सिखाते हैं अपने सक्सेसेस से इंट्रोड्यूस करो. हमने ये किया, उसने ये बोला कि मैंने ये नहीं कर पाई, इससे मैंने ये सीखा. इट वॉज अ वंडरफुल फ्लिप फॉर मी इन माई हेड. सो एनीवे, one learning was there from another young mentor. So जब COVID time में I was doing lot of projects at Medanta. I was leading a lot of vaccine development, drug development. There was so much that we could do in healthcare. डॉक्टर भल्ला जैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स को मैंने अप्रोच किया कि भाई मुझे बहुत मदद चाहिए है, मेरे पास टीम इतनी बड़ी नहीं है, कैन यू गिव मी सम स्टूडेंट्स. तो उन्होंने फटाफट अपने स्टूडेंट्स को भेजा मैसेज एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वॉलंटियर्ड. कोविड टाइम में यंग स्टूडेंट्स फ्रॉम फार्मेसी, फ्रॉम नर्सिंग, फ्रॉम फिजियोथेरेपी, फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी ऑल केम, स्टूड विद मी. आई हैड 70 इंटर्न वॉलंटियर्स. I'm really, really happy and inspired by them. But the sad thing that I felt, that despite them having degrees, they did not have the skill set. And that made me feel really bad. Because I'm a mother now, so I'm a late entrepreneur. At 50, I decided to become an entrepreneur. It was not at 25. And up at 56 months, I'm 6 months into my entrepreneurship journey. I think मेरे को ये चीज़ पहले कर लेनी चाहिए थी, बहुत पहले करनी चाहिए थी. तो जो मैडम ने आपको कहा, ये मैसेज मैं भी आपको देना चाहूँगी कि आप जब पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा एक्सपैंडेड वे से पढ़ें, थोड़ा दुनिया के बारे में पढ़ें, साथ में लीडर्स के बारे में पढ़ें, दुनिया क्या कह रही है. एक्सपैंड योर लर्निंग टू नॉट जस्ट व्हाट इज इन द टेक्स्ट बुक, व्हाट योर टीचर इज टीचिंग,
The learning is happening today. This is learning. कोई कभी आपको इंस्पायर कर जाएगा, हो सकता है if not today, maybe another session, somebody else will inspire you. Look, read books, read, I don't know, whatever inspires you, read. Don't waste your time on just social media. Even social media, there is some good learning to happen from there, so go there. And maybe if अगर मैं split करूँ to do में message, so anyway, coming back to my life, to do हम end में कर लेंगे. From there, I went into edtech and skilling. I said technology को use करते हैं to skilling. Can we take it, skilling to people who really need it without having to come to classrooms? Can I take it to tier 2 cities without having to come to classrooms? So I'm still in the journey. My first effort is in drug development, because that I was a part of. My second effort will be nursing and microbiology, perhaps something in pharmacy. So hopefully, keep an eye open out for us. Apar Health maybe in another 5 years will come with a success story like ma'am's. I'm optimistic. Great. Thank you so much, sir. Inshallah, will definitely will. मैडम की बातों से मुझे दो चीज़ें फिर ट्रिगर कर गई, एक इज़राइल की, एक स्किलिंग की। जब मैं इज़राइल में उतरा, पहले मेरी जर्नी थी, तो मैंने सोचा, मुझे किसी ने बोला यार वहाँ पे ना केयरफुली जाना, वो एयरपोर्ट में बड़ा तंग करते हैं। सी मैडम की भी गर्दन ऐसे हुई। सो आई रेड एन ए स्मॉल आर्टिकल विच इज ऑफ 90 पेजेस। उसने अपनी जर्नी के ऊपर लिखा था, द वन थिंग विच आई विल लव टू शेयर विद यू। वो क्या था, उसमें लाइन क्या था, अगर आप इजराइल जैसी कंट्री में जा रहे हो, विच इज़ एन इनोवेटिव हब मानी जाती है वर्ल्ड की, और दिस इज फाइन, दे एंजॉय देयर फेलियर्स, दैट्स व्हाई दे आर सक्सेसफुल। उसमें एक चीज़ उन्होंने लिखी थी, कहता दे डोंट सर्च योर लगेज। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो, दे सर्च योर माइंड एंड ब्रेन। दे विल कीप आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड दैट क्वेश्चन विल लीड यू, वो उनके अकॉर्डिंगली भी ये बंदा करने क्या आया है, वेदर ही इज फ्रॉम द राइट प्लेस, राइट जगह जा रहा है या क्या कर रहा है। एंड इमेजिन द कॉन्फिडेंस इन दैट, द क्वेश्चनरी दे विच दे हैव डिजाइन एंड द वे दे आस्क इट। अगर आपके मन में कुछ थोड़ी सी भी इधर उधर है, you get entangled into that. Am I right, man? बिल्कुल। ऐसे देख के पूछते हैं ना, मतलब वाइवा से वाइवा डिफिकल्ट होता है उनका वहाँ पे। See, look, why I have flagged this thing, जो mindset है आपका। हम जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, इसमें हर एक एकेडमिया में एक जो माइंडसेट है, सिर्फ हमने डिग्री लेनी है, डिग्री लेके हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम उस माइंडसेट को भी इस तरह की जब सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, क्या हम इसमें जंप कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं। एंड वेरी ब्यूटीफुली योर SGT यूनिवर्सिटी हैज़ आल्सो नाउ ओपन्ड, दे आर लकी दैट अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इनिशिएटिव ऑफ अटल इनोवेशन मिशन, दे हैव गॉट अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, जहाँ ये सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म बन के आपके सामने आने की कोशिश कर रही हैं, जहाँ कम्युनिटी बिल्ड करनी है, एंटरप्रेन्योर्स को कैसे हम कर सकते हैं, कम्युनिटी जो सोचे इस चीज़ को, सोशल एंगल से सोचे, उसको कैसे ले आ सकते हैं। सो यू हैव गॉट लॉट मेनी थिंग्स इन योर हैंड। दूसरी चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही थी, मैडम कह रही स्किल सेट की। जब कोविड हुआ, गलती से किसी ने मुझे एक सेमिनार में भी बुलाया, वहाँ पे जो वर्चुअल सेमिनार हो, हम बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो मुझे ख्याल आया, जब वहाँ पे जब वो वेव चल रही थी, लोगों को सिंपल अपना BP मेजर करना, सिंपल उनको इवन टेम्परेचर आपका कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, O2 के जो मीटर थे उसका, मतलब नेक्स्ट डोर के पास आपके पास कुछ नहीं था। इवन जो PHC थे, CHC, सारे दे वर सफरिंग फॉर दैट। तो एक दिमाग में ख्याल आया जो उनसे हमने शेयर किया, विच वॉज अप्रिशिएटेड एट कपल ऑफ। हमने कहा हम डिजिटल इंडिया के मिशन में हमने एक मिशन उठाया था, हर एक फैमिली से एक बर्थडे को हम डिजिटल इंक्लूजन के ऊपर ट्रेन करेंगे। वाई कांट इन हेल्थ केयर एटलीस्ट वी कैन train at least one person in every family on basic health care for measurements and all those things. So when you are thinking of skills, you are not thinking on a broader way. We will take, I'm just putting it before the university also. University can take a mission that training each person from each family, at least one person, and then taking the help of these people, how we can train, how can inclusion of that healthcare can happen, is going to be a big change, and SGT can be a leader into that for that. So
taking that, because Digital India mission has created a tremendous impact. I mean, because they trained one person from, आप हर एक आदमी को मोबाइल यूज़ करना आता है, उसको अपने वो कह रहे थे ना, कहते हैं, it is not we, it is an effect of our Dadi Ma who is now playing the videos and can order from that chat also. So this is the thing which digital inclusion happened. Why can't this healthcare inclusion with training one person from the healthcare can create an impact? Now coming to the story to the next, Namita ji. नमिता जी की एक अपनी खास स्टोरी है, जो जिस चैलेंज को इन्होंने अपने लेवल से उसको एड्रेस किया एंड हाउ डिफरेंट स्टेट्स वाले उसको अडॉप्ट कर रहे हैं. शी इज़ वर्किंग विद द डिफरेंट गवर्नमेंट इंक्लूजन्स. शी हैव गॉट अ ट्रेमेंडस व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस. जैसे मैंने सुना बाहर से ये अपनी नौकरियां, चाहे फेसबुक का है चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, उनके साथ काम करते हुए वांटेड टू यूज़ हर स्किल्स to impact the society because of some very personal challenges which she faced. I would love to hear your story. So I grew up, my name is Namita. I grew up in Delhi, in a very sort of normal conservative family. None of the women in my house had ever worked. But my father was a graduate from IIT Delhi, and my grandfather was a chairman at Ramjas Foundation. So my grandfather, he really sort of cared about education. So he wanted to make sure that, all the children in the house were educated. And because my father went to IIT, from very early in my life, I had a goal to get into IIT. It wasn't that I wanted to do anything with it. It was just, I had to get through IIT, right? It was to prove to my father that, I could do it. And I was good at math and science, and I worked hard, and I got through IIT Delhi, and I graduated from IIT Delhi, and this was back in 2001, and us samay, a lot of the US companies were hiring in India. So Microsoft and Amazon and i2 Technologies, like a lot of companies were hiring in India, and it ended up with 3 offers in the US. With Amazon, Microsoft and i2 Technologies. उस समय Amazon का किसी को पता नहीं था. So I was like, ये कौन सी company है? So I ended up joining Microsoft, and I moved to the US. I worked at Microsoft for 7 years. उसके बाद I moved to Facebook. I was there for 6 years. I got married, I had my first daughter. And at that point in our lives, me and my husband, we were really connected to India, and we felt like, if we ever want to move back to India, this was the time. Once our, children grew up, it would become very hard to move. So we said, ठीक है, 1 साल का timeline लेके आते हैं, we'll move to India, we'll see how things go, and if we like it, maybe we can spend some time there. So we moved to India, and this was actually December 2013. My daughter was 3 years old at the time, and I was actually pregnant with my second daughter. And my daughter was asthmatic, so when she was 2 years old, she had a massive asthma attack. So the doctors said it was like a 7 on 10. And because she was 2 years old, she couldn't really tell us when she was having breathing issues. So we had to be very careful with her asthma, watch for signs of wheezing to make sure, we were medicating her correctly. Anyway, we land here in December, right, in 2013. And at this point, we had no idea about air pollution. But she had a really bad winter, a lot of emergency visits. We didn't have a proper, medical system, doctors, we didn't have our network right here. So we really struggled with that. And then in 2014 was when Delhi was declared the most polluted city in the world. So this is where I became aware of, air pollution for the first time. And, it was just, given how personally it was affecting me, right? I became an advocate, trying to sort of, I was there in every rally and, talking about air pollution. We were a group of about 15, 20 people in the city who cared, honestly, who showed up at these events. It started with that. And, one of the big challenges I was facing was the lack of data, right? The nearest air quality monitor to me was in Delhi. And I lived in Gurgaon and had no idea what the air quality was outside, because I wanted to manage air quality in my house. I wanted to manage air quality outside. One option for us at this point was we moved back to the US. But we decided that, my husband actually was working here in his own, he started his own company, and, we said we'll give this a shot. So I was like, okay, let me actually try to fix this problem for myself. So I built, I got some purifiers, I set it up in my house, but then I didn't know if those purifiers were actually working or not. So I, got some sensors. I built a DIY sensor, and I started tracking air quality at home.
Then, I put one outside my house and I started trying to figure out, okay, when I can send my kids outside. I took one to my daughter's school because, I went to the school and I told them air quality is a problem. Please don't send my daughter outside when, the air pollution is really bad. She's very asthmatic. And they said, yahan to sab bahut sare trees hain, yahan koi pollution nahi hai. So, I actually built a monitor. I gave it to them. I said, please start tracking. Just start noting down ki kya air quality is so that you can help my daughter a little better. So, then, I started posting this data in my community, and then the community decided not to do a fireworks, cracker show that year for Diwali, which was really heartening. So really, I started realizing that, wow, data mattered, right? And that, we can drive a lot of awareness through data, because when, people think, oh, air quality kharab hai, they do nothing. But, when they see it's 350, when, 250 is hazardous, then they wake up and say, wow, the air quality is really bad. So this is sort of how, Ayurveda was born. Our goal was to basically develop, local air quality monitors so that we could democratize data, make more data available to citizens, and, and help drive awareness around air quality and potentially work with the government, right, to solve the problem. Unfortunately, जब मैंने इसमें काम शुरू किया, so our first project was with the Delhi Secretariat. I worked with Dr. Harshvardhan. Very forward-looking person. He said, हम क्या करेंगे 1st Jan को हम एक बड़ा सारा display Delhi Secretariat gate number 6 के बाहर लगाएंगे to showcase the air quality. So, I remember, 31st night, I'm sitting at the Delhi Secretariat on New Year's Eve, and, we set up this monitor and this display, and we took it live on 1st. And all the press collects around it because वो दिखा रहा है PM 2.5 is 400 micrograms per cubic meter. PM 10 is 500 micrograms per cubic meter, which is clearly hazardous at this point, right? So a lot of press got generated, there was, a lot of, like, every politician that walked in looked at that data. But eventually Environment Ministry ने कहा ये क्या है, we don't trust this data, यहाँ से हटाओ, and obviously it got removed. After a lot of challenges, we realized working with the government was going to be really hard. So we said, okay, we'll shift to the consumer. So हमने क्या किया कि we launched an air quality monitor that people could use in their homes, and we started selling it on Amazon. We launched a mobile app for Ayurveda, where on iOS and Android, where people could start tracking air quality data. So we started scraping data from all the government sites. We put up our own devices and we started showing this data, and that actually really picked up. So we started getting a lot of sales on Amazon. We couldn't keep up with production, and we thought, wow, we've hit the business model here, right? And we were driving awareness. A lot of people were reaching out to us for air quality monitors. But then, we realized that people care about air quality only 3 months in a year, right? So fair baat hi, the sales stopped, right? Nobody cared about air quality anymore. All right, so we said, okay, we can keep working on this, but this is not a sustainable business. So then, while we were working on this, a lot of schools we started working with. So, parents were pushing a lot of schools, you need to start tracking air quality, start, thinking about children's health. So we started working with a lot of schools. And schools became a great sort of client for us. So we worked with, now we work with many, many schools across the country and even internationally. But so we started deploying monitors in school. We started doing a lot of innovations with them, like start creating plans where they create these flags, right, which is red, green, yellow. When should students go outside? When they stay in? When should they wear a mask? A lot of schools started purifying air quality in school, showcasing that data to students, to parents. Similarly, we started working with a lot of offices. So, hotels, malls. So, we started doing a lot of commercial work around air quality. Now, in parallel, actually, on the government front, while we had stayed away from the government, we started having some progressive states actually reach out to us. So, Gurgaon municipal departments reached out to us. They wanted to set up a monitoring network in Gurgaon. So we actually started working with them, and it was really interesting. This was the CEO of GMDA, Dr. MD Sinha, very, very progressive man. And, he said, what we'll do, government se money lena to bahut mushkil hai. We're going to work with CSRs. We're going to get money, and then we will sign an MOU with you to start deploying sensors in Gurgaon. So then, we signed up with Carrier as a CSR, and we started deploying sensors around Gurgaon. Now we have almost 15 sensors that we have deployed in Gurgaon. फिर साथ में IIT Kanpur came along. There's Dr. S.N. Tripathi, who is a very sort of leading scientist in air quality, and he's trying to set up these air quality networks across the country.
he decided to come up with a new model, right? Where he said, we'll work with philanthropies to get money, and then we'll do industry partners to deploy the networks, and then we'll add the research teams to actually start doing research work, right, on this data, so that we can develop new understanding of air pollution and partner with government so that we can drive policy. And that was excellent, right? So now, we've done 3 massive projects with IIT Kanpur. We deployed 40 sensors in Chennai. We deployed 5 in Kanyakumari. And now we are deploying 690 sensors across UP and Bihar rural areas in partnership with the UP and the Bihar government, with their logos on our devices. I want to tell you why this is so huge, because today across the country we have only about 350 sensors from the government, right? Out of 8,000 cities and towns, only about 150 cities and towns have any kind of monitoring. No monitoring in the rural areas, zero, right? And for the first time, we will actually have data in rural areas. We have no idea what air quality, in rural areas looks like today. And the fact that, UP and Bihar government have come forward and said, we're going to participate with this, we're going to support you, and, we will set up, we will allow all the districts to set up one device in every block, in every district. It's sort of a huge movement. So, it's when I talk to people, right, they say, okay, the government is not doing anything, and, it's frustrating. I mean, I've had a really frustrating journey working with the government. But, there are things like this which really sort of hearten you and, and make your journey worthwhile. So yeah, that's... Yeah. Thank you. 3-4 चीज़ें फिर नोट हुई इसमें. Journey started from a challenge which is from your home. So आप स्टूडेंट्स को जब हम मेंटर करते हैं, हम ये कहते हैं कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, हमें आइडिया कहाँ से आएगा, हम ये they are very close to you, challenges are very close to you. Look into that, start your journey. Depending upon government and funding, lot of challenges, but there are ways. They help you. CSR से कैसे join करना है, philanthropists कैसे आपके साथ हुए. But look into another vertical which is coming out, which not only in India, the world is looking towards India for the data. And I can assure you, I can bet on this stage also, they are looking very seriously towards the academia, which can provide them the real data. The, what you call the ethics should be involved into. Don't get any manipulated data. But the ethical data, everybody is looking into that. UN started so many activities where they are working with the youth of today, typically with the academia, where different data they want on a real sense. And look into that, how our university, how these students can work under that creating of that data and then collecting that and properly placing into the different buckets which are properly needed, and then the challenges can be solved into that. इन सब की जर्नी से आपको एक चीज़ दिखी होगी जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ यहाँ पे खड़े होकर. Isn't a big why under all the trees. Why they started, why they wanted to do this. Look into the biggest and the strong why, and I will say where there is a why, there is a way. Okay, and you said, the madam said there are lot many facilities, lot many incubators. आपकी university में ही ACIC है. Just go there, walk in there, sit with 1 or 2 mentors over there, sit over the people who are sitting over there. Now they are populated with some good people. So go there, discuss your thoughts, discuss your ideas. Today also we have gotten a pitching session from 2 to 4. So keep doing something. Okay, जो इन्होंने inspiration मुझे दी है आज, I think same you must have got it from your side also. Thanks a lot. Thank you very much.